So friends, in this session we are going to learn श्वास कोश ऊर्जान्वन क्रिया or lungs energization kriya. This is basically a sequence of body movements with breath which improves the oxygenation and builds up immunity. ये एक सीक्वेंस है बॉडी मूवमेंट्स का और हम श्वास के प्रति भी ध्यान रखते हैं और ये क्रिया हेल्प करती है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने में. And friends, as you know, oxygenation is a basic need of our body. And if there is a lack of proper oxygenation, it can lead to starting from common diseases like flu and indigestion to more serious diseases like TB, asthma and even cancer. तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजनेशन हमारी एक बेसिक नीड है और अगर ये प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो ये कॉमन डिजीज से लेकर मोर सीरियस डिजीज तक भी ले जा सकती है. सो दिस क्रिया हेल्प्स यू इन प्रिवेंटिंग द डिजीजेस इन फ्यूचर एंड इन केस यू आर हैविंग ए डिजीज देन दिस क्रिया ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिल्ड इम्यूनिटी and recover from that disease speedily. Especially if you are having stress or you are feeling depressed or you are having indigestion or if you feel tired, you have body pains or calf muscle pains or eye problem, ear problem, in all of these, this kriya is very, very effective. तो ये क्रिया न केवल आपको आने वाले रोगों से रोकने में हेल्प करती है बल्कि यदि आप किसी समस्या से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो उस डिजीज से भी क्विकली रिकवर होने में ये क्रिया आपकी हेल्प करती है. स्पेशली अगर आपको अपचन की समस्या है, गैस की समस्या है, शरीर में दर्दों की समस्या है, मांसपेशियों में दर्द की समस्या है या जल्दी थकान की समस्या है या इरिटेशन की समस्या है तो इन सब चीज़ों में भी ये क्रिया बहुत ही हेल्पफुल है. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग इट राइट अवे. नमस्ते. आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन यू. आपके भीतर की दिव्यता को मेरा नमस्कार है. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस थॉरोली so that you can practice it in the right manner. In the first step of this kriya, we take the arms up while inhaling. इस क्रिया के पहले स्टेप में हम भुजाओं को ऊपर स्ट्रेच करते हैं सांस अंदर भरते हुए एंड होल्ड देयर टिल द टाइम इट इज वेरी कंफर्टेबल. वहाँ पर हम होल्ड करते हैं जितना कंफर्टेबली हम कर सकते हैं, few seconds. When we feel like exhaling, we drop the heels on the ground and bring the arms down. और फिर जब सांस छोड़ना होता है हम एड़ियों को जमीन पर ड्रॉप कर देते हैं और हाथों को पीछे ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं. आप साइड से भी देख सकते हैं. यू कैन सी फ्रॉम द साइड हैंड्स आर स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द बैक. हियर ऑल्सो वी होल्ड till the point it is comfortable. यहाँ भी सांस को बाहर छोड़कर होल्ड करते हैं जितना कंफर्टेबली कर सकें. When we feel like again breathing in, we breathe in and stand on the toes. जब हमें फिर से सांस लेना है तो सांस अंदर भरते हुए भुजाओं को फिर से ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं, होल्ड करते हैं. And when we feel like exhaling, then again we drop the heels on the ground and bring the hands down and stretch the hands back. फिर जब सांस लेना है फिर से हम पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, हाथों को ऊपर. Now we can make it a continuous motion. Breathing in, we stretch the hands up and stand on the toes. और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे और एड़ी को नीचे ड्रॉप करते हैं.
Here we need to pay attention to a couple of things. When we are breathing out and we are dropping the heels on the floor, there should be a shaking movement in the body. We need to drop the heels with some force. It shakes up the body, it improves the blood circulation throughout the body also. And there are certain acupressure points in the heels which get exercised, so it improves your digestion also. यहाँ पर हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि जब हम सांस छोड़ते हुए हील्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो हील्स को हम थोड़ा फोर्स के साथ ड्रॉप करते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी में एक शेकिंग मूवमेंट आ जाता है, पूरे हाथ पैर हिल से जाते हैं। तो इससे पूरी बॉडी हरकत में आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और एड़ी में जो डाइजेशन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वे भी एक्सरसाइज हो जाते हैं। एंड एनीवे दिस फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ is going a long way in the lungs activation। और ये जो क्रिया का फर्स्ट स्टेप है ये फेफड़ों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है ही है, उनको खोलने के लिए, उनके एनर्जी चैनल्स को खोलने के लिए। श्वास कोश ऊर्जान्वन क्रिया जो इसका नाम है, तो श्वास कोश से मतलब फेफड़ों से है। फेफड़ों के अंदर बहुत छोटे छोटे कोश होते हैं जो कि श्वास प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। So like this is a very effective technique. The first step of this kriya itself is very effective in the lungs activation, lungs energization. So we should do it regularly and spend at least 5 to 10 minutes in this first step. At present we are only spending about 3 minutes in this step. तो जब आप इसको रेगुलर करें तो बेटर होगा कि आप 5 to 10 मिनट्स ये फर्स्ट स्टेप ही करें। अभी हम यहाँ पर कम समय ही इसको कर रहे हैं, लेकिन आप जब करें तो इसको 5 to 10 मिनट्स करें। Then depending upon if you are feeling tired or you feel like taking a little bit rest, you can take rest in this position for a few seconds. Just feel the breath, feel the body. आपको हल्की सी भी थकान लग रही हो या आपको रेस्ट लेने का मन हो तो इसी पोजीशन में आप few seconds का रेस्ट ले लें। अपनी शरीर के प्रति जागरूक हों, सांस के प्रति जागरूक हों और उस एक हीलिंग एनर्जी के प्रति धन्यवाद भाव में बने रहें। Just feel gratitude, feel grateful to that one healing energy that is manifesting in all the forms. We can call it Ek Onkar, Om, Ishwar, Allah, by whatever name. And the same healing energy is manifesting in the forms of this body, this breath, and all the sensations you are feeling. Now we come to the second step of this kriya. Here we hold the hands in the front like this while breathing out. So this would be the position while breathing out. इस क्रिया के दूसरे स्टेप में हम दोनों हाथों को इस तरह से रखते हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए, और फिर सांस अंदर भरते हुए इस तरह से मुट्ठियों को टाइट कर लेते हैं चेस्ट के पास। While inhaling, we hold tight the fists and the whole body is tightened. To expel the stale air from deeper areas of lungs, we use double breathing out like this. और फेफड़ों के गहरे रीजन से
बासी हवा बाहर निकालने के लिए हम डबल ब्रीदिंग का यूज करते हैं इस तरह से. Generally, we use only 10 to 20% of the full lung capacity to breathe in the air. So by doing this exercise, we are increasing that lung capacity. We can use double breathing for breathing in also, like this. It expands your lungs capacity. Lungs पूरे full हो जाते हैं. Double breathing out. Feel grateful to that one healing energy that is manifesting in all the forms. Double breathing in. Stretch the whole body. Again, hands are near the chest. Double breathing out. So we take rest in this position. Pay attention to your breath and any sensations you are feeling throughout the body. In the next step of this Kriya sequence is Santulit Tadasana. इस क्रिया का तीसरा स्टेप है संतुलित ताड़ासना और बैलेंस्ड ताड़ासना. In this, we take the hands up, interlock the fingers and stand on the toes. Hold there till the point it is comfortable. इसमें हम सांस अंदर भरते हुए हैंड्स को ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए एड़ी को नीचे ड्रॉप करते हैं और पंजों को हल्का सा ऊपर उठाते हैं. While breathing out, we drop the heels down and the toes are lifted up slightly. So here you can note one key difference from the commonly known Tadasana. Here we are also standing on the heels for a few seconds. Again you can see, while breathing in, we stand on the toes. Now when we are breathing out and we are dropping the heels, just note, we will be lifting up the toes like this. So this makes it balanced. तो यहाँ पर आपने देखा कि पंजों को हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं. जब सांस छोड़ते हुए एड़ियाँ ड्रॉप होती हैं तो पंजे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं. इससे ये बैलेंस्ड हो जाता है. तो हम पूरा समय पंजों के बल ही नहीं खड़े हैं, हम कुछ समय के लिए एड़ी के बल भी खड़े हैं. तो अगेन यहाँ पर एड़ी के पॉइंट्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं. सो सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन द हील्स फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, वी आर एक्टिवेटिंग द पॉइंट्स ऑन द हील्स ऑल्सो. Bring the hands down. We can take rest for a few seconds in this position. And then again, while breathing in, stand on the toes, hold till comfortable. This step of the Kriya especially exercises the calf muscles. So if you are having pain in the calf muscles, or if you are having indigestion, constipation, gas problem, in all of them, this particular step is very, very effective. ये जो स्टेप है इस क्रिया का, ये आपकी पिंडलियों की स्पेशली एक्सरसाइज करता है. और अगर आपको इंडाइजेशन की, अपचन की समस्या है, गैस की समस्या है और कब्ज की समस्या है, तो उसमें ये स्टेप बहुत ही प्रभावकारी है. Now we come to the resting position again. Now in the next step of this Kriya sequence, we hold the hands like this near the chest, and while breathing in, we take the arms up
and while breathing out we take the arms down. इस क्रिया सीक्वेंस के अगले चरण में हम दोनों हाथों को इस तरह से सांस अंदर भरते हुए ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हैं. When we are taking the arms up, we do it with a little force so that it shakes up the whole body. जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा फोर्स के साथ ले जाते हैं जिससे कि पूरी बॉडी में एक शेकिंग आ जाती है. This exercise is very good for cold seasons. So whenever you are feeling cold, you can do this for more time and it will increase heat in your body. But those who are having high blood pressure problem or heart problem, they should do it very very slowly or under the guidance of a knowledgeable person. ये एक्सरसाइज सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी है. अगर आपको ठंड लग रही है तो आप इसको ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं तो आपकी बॉडी में हीट आ जाएगी. लेकिन जिन लोगों को भी हार्ट की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वे इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत ही धीरे धीरे करें या किसी नॉलेजेबल पर्सन के गाइडेंस में करें. अनदर पॉइंट टू नोट इज व्हेन द आर्म्स आर कमिंग डाउन, there should be a little patting from the elbows to the rib cage, to the lungs area. एक बात और आप ध्यान दें कि जब हम हाथों को नीचे लाते हैं तो कोहनियों से हल्का सा पैटिंग होगी रिब केज की तरफ जहां पर लंग्स का एरिया है. तो इससे फिजिकली भी उस रीजन की एक्सरसाइज हो जाती है. When you are patting lightly on the lungs, it further stimulates the lungs region. Take rest for a few seconds. Again, feel the breath, feel the body sensations, even the sensation of breath, and regard all the sensations as manifestation of the same healing energy that is pervading inside and outside everything. Now we come to the next step of this Kriya sequence, that is Tiryak Tadasana. Here we take the arms up like we did in Santulit Tadasana. While breathing in, we bend onto one side. Feel the stretch in the lungs region. Feel the stretch in the sides. Hold till comfortable. अब हम इस क्रिया सीक्वेंस के अगले चरण पर आते हैं जो है तिर्यक ताड़ासन. हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं ताड़ासन की तरह और सांस भरते हुए एक साइड झुक जाते हैं. एंड व्हाइल ब्रीदिंग आउट वी कम टू द ओरिजिनल पोजीशन. एंड प्लीज डू दीज स्टेप्स इन ए जॉयफुल मैनर. You don't have to force yourself, and even if you are not able to do any particular step in the exact manner as we told, then also don't worry. Just do that to the extent that is comfortable to you right now, and slowly with practice you will be able to do it better and better. इनको आपको forcefully नहीं करना है, आपको joyfully करना है और जिस एक्सटेंट तक आपको कंफर्टेबल हो वहीं तक करना है. हमने यहाँ पर माइन्यूट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ें परफेक्टली नहीं भी कर पाते हैं स्टार्टिंग में तो चिंता की कोई बात नहीं है. आपसे जितना कंफर्टेबली होता है आप वहाँ से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसको और बेटर भी कर पाएंगे. अगेन व्हाइल इनहेलिंग, bend to one side. सांस अंदर भरते हुए साइड में बेंड करते हैं और सांस छोड़ते हुए मिडिल पोजीशन में वापस आ जाते हैं.
This again further exercises the lungs area specifically, the areas which were kind of deactivated due to our long sitting postures and wrong sitting postures, both long duration and wrong sitting postures. Due to them, whatever areas of our lungs get dormant, this exercise will activate them again. Do it in a relaxed manner. You can take rest for a few seconds. You do not have to force too much. Do only till the extent you are comfortable. Take rest in this position for a few seconds. Feel the breath and body sensations and be in a feeling of gratitude to that loving, healing energy. Now in the next step of this Kriya, we keep the hands stretched like this and we bend the knees a little. Please note that those who are having major problems in the knees, they should not bend the knees. They can just put the hands in the front. And while inhaling, we expand the lungs and stretch the hands with fists closed like this. सांस अंदर भरते हुए हम हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, मुट्ठियां बंद करके. In this step again, we use double breathing to expel any stale air from the lungs. जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वे घुटनों को बेंड नहीं करेंगे. And while breathing in also, it is better to use double breathing like this. इस स्टेप में भी हम फेफड़ों की बासी हवा को बाहर निकालते हैं डबल ब्रीदिंग का यूज करते हुए. डबल ब्रीदिंग आउट. Those who can bend a little, they should bend only little. Those who are perfectly healthy, they can bend little more. Double breathing in. अगर आपको घुटनों में दर्द होता है बेंड करने से तो आप उनको बेंड ना करें. धीरे धीरे जब आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके घुटने रिकवर होने लगेंगे, तब आप फिर बेंड कर सकते हैं. When your knees start recovering, at that time you can start bending little by little. In the next step, we stretch the hands up. While inhaling, the body becomes tight. अगले स्टेप में हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हैं. And while exhaling, we bring the hands down like this and bend a little. Again, here also same guideline for bending the knees. अगर आपको प्रॉब्लम है घुटनों को बेंड करने में तो बेंड ना करें. डबल ब्रीदिंग आउट. And while breathing in also, it is better to use double breathing like this. Feel grateful to that one healing energy that is manifesting in all the forms. Double breathing out. Double breathing in. Now bring the arms down. हाथों को नीचे ले आए. So friends, these are the steps of the Shwas Kosh Urjanvan Kriya. The best time to do this is empty stomach in the morning. But otherwise also you can do it anytime during the day when the stomach is relatively empty and not quite full. तो दोस्तों ये थे स्टेप्स श्वास कोश ऊर्जान्वन क्रिया के.
और बेस्ट टाइम इसको करने का है मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और इसको आप दिन में भी कर सकते हैं जब पेट एकदम पूरा भरा नहीं हो बट रिलेटिवली एम्प्टी हो. And as any yoga exercise, it is best to do it in an open, fresh air environment. But if that is not possible, then you can do it indoors as well by keeping doors and windows open or making sure that proper air circulation is there and proper natural light is coming. और जैसा कि सभी योगाभ्यास में निर्देश दिया जाता है कि बेटर होता है कि इनको आप खुले एनवायरनमेंट में करें, लेकिन अगर वह पॉसिबल नहीं है तो आप इसको घर के अंदर भी कर सकते हैं. बट आप थोड़ा ये देख लें कि प्रॉपर हवा का आदान प्रदान हो रहा हो, दरवाज़ा खिड़की थोड़ा खुले रहें और प्राकृतिक प्रकाश भी आता रहे. You can include this kriya in your daily routine, especially if you are having any lungs related problem or digestion related problem or body pains, stress, etc. Then we recommend you do this kriya daily around 15 minutes at least. तो दोस्तों, अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप ये क्रिया अराउंड 15 मिनट्स तक डेली करें. बट इफ़ यू आर डूइंग इट एज ए प्रिवेंटिव मेजर टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी, देन डेली 5 to 10 मिनट्स आर ऑल्सो सफिशिएंट. अगर आप इसको जनरल इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए अपने रूटीन में इंक्लूड कर रहे हैं तो 5 to 10 मिनट्स भी काफ़ी होंगे. So hopefully this session was useful to you all. And for any of your specific physical or mind related health problem, you can always reach out to our team on these numbers. So with these best wishes from our side, may all be happy and healthy. Thank you.